Yes, good afternoon, everyone. So today's discussion is going to be about the writing and grammar section, and this I have taken from a previous year paper. The first question is regarding a notice which mentions the name of the candidate from whom the notice has to be written. Along with that, the name of the school, the city has been given, and the notice is about requesting for from the students to submit poems, drawings, and articles which have to be published in the school magazine. Okay, so you know, because आपने एक चीज़ के बारे में बताना है, submissions आपने लेने हैं, so you will mention all the basic details, and then you have to mention to whom it needs to be submitted to, the last date. Okay, and maybe you may give out some topics if you wish to, because we are falling under some word restriction, so it is not necessary that you include several more details, but definitely it is important to furnish all the basic details. Okay, so that's what you need to do in the notice. Now the next is dialogue completion. Dialogue completion is something of great importance. Okay, and it gives you good 4 marks, and it is something which is comparatively easier than any other section. Why I say this? I say this because you can write anything on your own and you need not follow a format. As in notice, in case you make a small mistake, you may lose out marks, because you have to mention so many things there. But in dialogues, you just have to mention 4 sentences and you are done. But in order to do that, your tenses and your command, also your understanding should be of paramount level. आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए. अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आप एग्जैक्ट क्रिस्प क्लियर सेंटेंसेस में अपनी बात को कहो. अब जैसे यहाँ पे आपको कॉन्वर्सेशन गिवन है, तो जब आपके सामने कोई डायलॉग कंप्लीशन आता है, समथिंग लाइक दिस, आप कंप्लीट डायलॉग को रीड करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, and then you will think that what goes inside. For instance, I will just give one example. Maybe you can write some other sentence than what I tell you now. Okay, but it has to make sense along with the next conversation that goes on there. Okay, so I hope I am clear on this. Then it says, I would like to borrow Great Expectations by Charles Dickens. So then the librarian says something and the student mentions that I'm not able to find it on the shelf. Okay, so obviously आपको ये दिख रहा है, तो आपको ये ज़रूर लग रहा होगा कि वो कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं कि वो शेल्फ पे जो है वहीं पे होगा. ठीक है, तो उससे रेफर कर रहे हैं. तो आप कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी ढूंढोगे. ठीक है, लिखोगे कुछ ऐसा ही सेंटेंस कि it is there on the second shelf. Okay, this book is kept in the third aisle. Okay, you can write any such word, okay, which relates to that. The student next says that I am not able to find it on the shelf. Okay, so the librarian is referring to some shelf or some corner of the library. Then the librarian says then it must be issued to someone else, whereas the student makes some request. Librarian or asks something and the librarian answers, it will be returned tomorrow. Do you need it urgently? So the librarian is first answering and then posing a question. So यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पे ज़रूर एक क्वेश्चन होगा. ठीक है, it will be returned tomorrow, so return से related है, तो वो क्वेश्चन यही कर रहा होगा, when will it be returned? Okay. Then next is, do you need it urgently? अब इसका रिप्लाई और लाइब्रेरियन की बात, दो डायलॉग्स हैं कंसेक्यूटिवली आपको दिए हुए जो आपको लिखने हैं. एंड द लाइब्रेरियन देन मेंशंस दैट कम एंड टेक इट फ्रॉम मी टुमारो, एंड द स्टूडेंट्स थैंक्स द लाइब्रेरियन. ओके, सो कम एंड टेक इट, सो इट मीन्स दैट समथिंग हैज हैपेंड wherein the librarian has agreed to give it to him. So when it will be returned, will it be returned? So he says tomorrow. Do you need it urgently? The student may mention, yes, I have to make notes from it. Yes, I need it for my exams. Okay, yes, I am doing a project on it. So there can be anything. Okay, because the answer is also open. So librarian says, surely I will arrange it. Come and take it from me tomorrow.
Okay, so that's how you have to fill in this conversation. Then moving to the next question, which is a question on your writing skills. Earlier there used to be 2 questions of 8 marks each. This year there's going to be just 1 question, and there's a lot of variety. By saying variety I mean that you have several choices. आप आर्टिकल भी लिखना के लिए आ सकता है, स्पीच, देन यू हैव डायरी एंट्री एंड अलॉन्ग विद दैट लेटर राइटिंग, एंड लेटर राइटिंग ऑल्सो इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. So there's a big range that you have, so you need to choose your option wisely when you have to attempt the answer out of the options given over there in the question paper. Okay, because you should always be attempting something which you are sure of. In case you are not sure of something, you should not be attempting it, and if at all, always follow coder for attempting questions related to writing skills. Coder I have already mentioned in the previous class, which was related to writing skills, which means you need to collect your ideas, organize them into the right order, then you need to make a draft maybe in your mind while doing the paper, and then edit that draft, and then redo it, rewrite it. Okay, so that's how it needs to be done over here. Then moving from this writing question segment to the grammar one. Okay, so in grammar, as you can see, this question number 7 that's there on your screen, it mentions there are some notes given and you have to complete them. So it is an exercise related to note making, wherein आपको कुछ points given है, आपको grammar के according उन points को fill in करना है in blanks में. ठीक है, अब इनको करने का भी वही तरीका है. माइंड यू टू अटेम्प्ट एनी piece of grammar in this section, you need to first take a complete reading. कई बच्चे क्या करते हैं, पहले ही आंसर्स लिखना शुरू कर देते हैं and they end up getting confused. So you should never do that. You should always first look for options. Okay, how you have to do it, you should always understand which tense is involved over there and then attempt it. Do not attempt it otherwise, else you will be stuck somewhere. You may make one or the other mistake. कोई ना कोई गलती ज़रूर आपसे हो जाएगी. So it is always better not to do it, and in order to avoid this kind of mistake, you should always take a complete reading, understand the question and then attempt it. Okay, you should never be doing it without understanding the question. I hope I am clear on this. So now let's look at this question, and to do this I would advise you to take a reading of the notes first and then the question. So I give you just 30 seconds to read this. Okay, read the notes, then read the question. Okay, so I hope you have taken a thorough reading of this notes, and then along with the notes you have also taken a reading of the paragraph. So the first blank should be, it says our dependence on automobiles like cars dash to the environment. ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है depend on car, danger to environment. ओके, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिपेंड ऑन कार्स का डिपेंडेंस जब हमने कर दिया ऑन ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स करके ऐड किया गया है, तो आप कहेंगे इज डेंजरस
to the environment is already given. Okay, they dash which pollute the air. क्या करते हैं जिससे एयर पॉल्यूट होती है. एयर पॉल्यूशन सीरियस प्रॉब्लम से पहले हमें एक पॉइंट दिया हुआ है एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस. सो हम लिखेंगे दे एमिट पॉइजनस गैसेस एंड वी विल नॉट यूज ऑफ हियर बिकॉज इट्स डेफिनेटली नॉट रिक्वायर्ड. Then the next is the problem is getting more serious because of dash metro cities. Okay, so air pollution serious problem आप notes में देखोगे overpopulated metro cities. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा word है the problem is getting more serious because of किसकी वजह से. metro cities क्या हैं वो उनकी property overpopulated, तो आप overpopulated लिखेंगे यहाँ पे. अब next में है the transport policy of the country needs to dash at the earliest. ठीक है, सो नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पॉइंट है रिवाइज ट्रांसपोर्ट पॉलिसी. तो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के साथ लिखा हुआ है रिवाइज, तो हम कहेंगे नीड्स टू बी रिवाइज्ड. ओके, आप ध्यान देते चलेंगे, इन सभी में मोस्टली हमारा वॉइस यूज हो रहा है. ओके, सो बी रिवाइज्ड एट द अर्लीस्ट. द डैश न्यू ट्रांसपोर्ट पॉलिसी शुड ब्रिंग रिफॉर्म इन फ्यूल यूज्ड इन इंजन्स. डैश न्यू, ठीक है, द इंट्रोड्यूस्ड न्यू ट्रांसपोर्ट पॉलिसी. ओके, अब रिफॉर्म इन फ्यूल हमें नोट्स में दिया हुआ है तो वो यहाँ पे यूज़ कर लिया गया. रिफॉर्म इन फ्यूल यूज्ड इन इंजन्स. द एम शुड बी टू इंक्रीज नॉन स्मोक एमिटिंग फ्यूल. ओके, नॉन स्मोक एमिटिंग फ्यूल एम ये होना चाहिए. ठीक है, प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स नो एमिशंस. तो नो एमिशंस वाला पॉइंट यहाँ पहले आ गया. नॉन स्मोक एमिटिंग फ्यूल में नो एमिशंस हो गया. This can be achieved by dash vehicles, achieved by providing electricity और battery operated vehicles. Okay, so by के साथ जो verb हमें दिया है हमने वो use किया. ठीक है, by providing battery और electricity or battery operated vehicles. So that's how you need to do it. And the last one was a little bit tricky for some students because आप कंटिन्यूएशन में जब सभी पॉइंट्स कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको वही कंटिन्यूएशन में ढूंढते हैं एंड देन यू एंड अप गेटिंग कंफ्यूज्ड. बट देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज जो लास्ट पॉइंट है आपके नोट्स में वो आपके नोट मेकिंग में सेकेंड लास्ट है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करके दे रखा है कि उस किस तरह के व्हीकल्स चाहिए. तो आपने बस वो नाउन वहाँ पे प्रोवाइड करना है अलॉन्ग विद द राइट वर्ब एंड इट्स फॉर्म. ओके, सो दैट्स हाउ यू नीड टू डू दिस. Next is editing and I will be taking up this only. The next part, the rest of the part I will be taking up later in the next video. So this is editing. Editing means there is an error in each line and then you need to correct it. So this passage has not been edited and there is an error in each of the lines. Okay, write the incorrect and correct word in your answer sheet against the correct blank number. सो आपको ब्लैंक नंबर के सामने ये एक सिंपल सी छोटी सी मिस्टेक होती है बच्चों से कि आपने ए बना दिया एग्जाम्पल को और फिर बाकी कंटिन्यूएशन में लिख दिए और एग्जामिनर ये जानता है कि आप ठीक सीक्वेंस में कर रहे थे, बस आपसे गलती से हो गया है. बट फोर्सिबली के फॉलोइंग द नॉर्म्स द एग्जामिनर ऑल्सो हैज़ टू डिडक्ट योर मार्क्स बिकॉज यू हैव मेंशन्ड द रॉन्ग सीरीज. सो ब्लैंक नंबर्स करेक्ट रखने बहुत ज़रूरी हैं. किसी भी पेपर में किसी भी क्वेश्चन के आंसर नंबर्स करेक्ट रखने बहुत ज़रूरी हैं. ओके, सो ये यहाँ पे कह रहा है मधुबनी पेंटिंग आर वन ऑफ द मेनी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म. ठीक है, तो आर हमने कहा, मधुबनी पेंटिंग इज वन ऑफ द मेनी ट्रेडिशनल. वन ऑफ द मेनी कहा हमने, वन ऑफ द मेनी, तो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स. ओके, सो फॉर्म्स इंस्टेड ऑफ फॉर्म, दिस इज द एरर हियर. It is also known as Mithila or Godana paintings. Okay, also known as ये वाली या ये वाली. ठीक है, मधुबनी को हम मिथिला या गोदाना पेंटिंग्स भी बोलते हैं. Okay, so no की जगह known. This were built in Mithila or Godana districts of Bihar and then spread to villages around Madhubani. This painting is popular all of India. ओके, सो एक पेंटिंग का टाइप बता रखा है हमें, जनरल उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है. जब जनरल डिस्क्रिप्शन है तो हम टेंस जो है प्रेजेंट रखेंगे, कहीं कहीं पे हल्का वॉइस का यूज़ होगा. अकॉर्डिंग टू इट हमें सभी वर्ड्स अपने यूज़ करने हैं. ठीक है, चाहे वो एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, मॉडल्स हैं, कुछ भी चीज़ उससे रिलेटेड गिवन है. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट में तो करेक्ट किया, अपना ए में करेक्ट किया फॉर्म्स इंस्टेड ऑफ फॉर्म. देन वी हैव नोन इंस्टेड ऑफ नो.
देन दिस वर डेवलप्ड इन दिस और दिस, ओके, दिस की जगह दीज, क्योंकि यहाँ पे हम पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनको ऐसे जाना जाता है। पहले एक पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, क्योंकि वो एक आर्ट फॉर्म की बात की जा रही है तो इसे सिंगुलर रेफर कर रहे हैं, ठीक है। पेंटिंग कहा जा रहा है क्योंकि वो नाम के साथ आ रहा है, कलेक्टिव नाम के साथ आ रहा है। फिर ये पेंटिंग्स है ऐसे बोला जाता है, तो दीज वर डेवलप्ड इन, हुई थी, तो पहले की बात बता रहा है। मिथिला और की जगह एंड, क्योंकि इन दोनों में हुई थी, ठीक है। वहाँ पे हम नेम में और लगा रहे हैं, और इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको ये भी बोला जाता है, कहीं पे ये भी बोला जाता है, ठीक है। एक जगह के अगर दो नाम है तो उसको उन दोनों में से किसी एक नाम से बोला जाता है, ठीक है। बट ओरिजिन जो है उसका इन दो अलग अलग जगहों से हुआ, तो दोनों को एंड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड ईफ वाले सेंटेंस में ये देन और देन, very common error made by many students, than and then there, so ये दो errors बहुत commonly आ जाते हैं। so if it is THAN, then you have than which represents comparison, किसी दो चीज़ों में तुलना की जाना, और then THEN मतलब फिर, और यहाँ हमारा रेफरेंस फिर से है कि पहले वो इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलप हुई और उसके बाद फिर वो विलेजेस जो थी मधुबनी के आसपास वहाँ भी फैल गई, तो फिर यहाँ पे हम इसी वजह से देन लगाएंगे। और दूसरा ऐसा ही होमोफोन मैंने कहा देयर, ओके, सो इट्स THERE जिसका मतलब होता है वहाँ, और THEIR जिसका मतलब होता है उनका, तो ये भी बहुत डिफरेंस दिया होता है। तो EIR उनका, और जैसे हम हियर लिखते हैं यहाँ हियर, उसी के साथ देयर होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हियर देयर में जैसे हियर होता है उसके आगे बस टी आ जाएगा, तो हमारा देयर यानी वहाँ वाला बन जाएगा, और उनका है तो उसका दूसरे वाला स्पेलिंग है, EIR वाला स्पेलिंग है। That's how I make all my students remember these spellings. So you may remember it this way. If you get confused over here, many get confused over here. And the last line it says this painting is popular all of India. All of India doesn't really make sense. So all over India, because we are talking about a complete country. So this painting, यहाँ पे दिस ही आएगा क्योंकि ये मधुबनी पेंटिंग की फिर से बात कर दी है उन्होंने, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी की बात हो रही है, अलग अलग नामों की बात नहीं हो रही जैसे पहले हुई थी। सो दिस पेंटिंग इज पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया इंस्टेड ऑफ ऑल ऑफ इंडिया. So I believe it is this. I will be discussing the rest of the part later in the next video, probably tomorrow. And till then, keep your preparation up and keep practicing grammar, because that's the only way to achieve good score in it. Good luck for your preparation.